Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is endoskeleton, topic 7, chapter 16, sport and movement. Endoskeleton is that type of skeleton which is present inside the body, जो कि बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट हो, तो ऐसे स्केलेटन को हम क्या कहेंगे? एंडोस्केलेटन. Endoskeleton is consist of two components, that is bone and cartilage. These two type of tissues combinedly make the endoskeleton. I have written the properties and some specific features of these two type of tissues. Both bone and cartilage is a type of connective tissue. Mean they bind different types of टिश्यूज. ये बाइंडिंग का रोल प्ले करते हैं. बोथ बोन एंड कार्टिलेज इज रिजिड, मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. एंड लिविंग सेल्स, ये लिविंग होते हैं. कार्टिलेज का वी विल डिस्कस नेक्स्ट, बट फॉर इंस्टेंस बोथ आर लिविंग. And both are made up of a specialized protein. This specialized protein is known as collagen protein. So these are the four properties of bone and cartilage: connective tissue, rigid and strong, living cells, and collagen protein. If we see the structure of bone in detail, bone is a rigid form of connective tissue. Bone is consist of two layers: compact bone and spongy bone. Compact bone is the outer layer of bone. Outer part of bone. And compact bone is hardened by the deposition of calcium phosphate. If you remember, in exoskeleton we discussed that exoskeleton is hardened by calcium carbonate, but in the case of endoskeleton it is hardened by the calcium phosphate. Compact bone also have the fibers of a specialized protein known as collagen protein. This outer layer is strong, thin and hard. Inner to the outer layer, this layer is known as spongy bone. Spongy bone is the interior part of the bone. That is exterior and that one is interior. Spongy bone is light, rich in blood vessel and highly porous. इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं. स्पॉन्जी बोन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, is light, porous and richly supplied with blood capillaries. And in the last extreme interior there is a fluid present in the bone known as bone marrow. Bone marrow helps in the formation of blood cells. So to recall,
Bone is consist of two layers, that is compact bone and spongy bone. Compact bone is made up of collagen protein plus deposition of calcium phosphate. Spongy bone is interior, it is highly porous. First property, it contains blood capillary. Second property, and it is light. Third property. So this is the brief structure of bone, in which we discuss the compact bone and spongy bone. He may ask the difference between the compact and spongy bone. So you have to give its position, outer or inner, and its composition. Further moving on, there are three types of bone cells. हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह के बोन सेल्स होते हैं, दैट इज ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट. ओस्टियोक्लास्ट is known as bone forming cells. Osteoblast is bone forming cells. Osteoclast is bone dissolving cell. Bone dissolving cells. Osteocyte is a mature bone cell. Is a mature bone cell. So, in case when an organism born, first it develops cartilage. उसकी सारी जो bones हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं? Cartilage. After that, cartilage is converted into the hard bone. So, stem cells represent initial cell. Osteoblast, bone forming cell. ओस्टियोसाइट मेच्योर सेल, ओस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल. ये कार्टिलेज को डिसॉल्व करके उसे रिप्लेस करता है ओस्टियोब्लास्ट से. ओस्टियोब्लास्ट फिर बनाता है दरमियान वाला सेल मेच्योर बोन सेल. सबसे पहले कौन बनेगा? स्टेम सेल. फिर ओस्टियोक्लास्ट आएगा, डिसॉल्व करके से रिप्लेस कर देगा ओस्टियोब्लास्ट से. ओस्टियोब्लास्ट फिर क्या बनाएगा? मेच्योर होके ओस्टियोसाइट. ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट में सिर्फ एक डिफरेंस है. ओस्टियोब्लास्ट इज अ बल्की सेल. ओस्टियोसाइट जो है ये श्रिंक्ड सेल होता है, इसका इतना ज़्यादा बल्कीस्ट मास नहीं होता. इसका काफ़ी जो मैस है वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है. और जो थिन सा सेल बनता है स्ट्रॉन्ग, वो क्या कहलाता है? ओस्टियोसाइट. सो टुडे वी डिस्कस्ड द डिफरेंस, द डिटेल ऑफ एंडोस्केलेटन. इन एंडोस्केलेटन we discussed the definition of endoskeleton, we discussed the composition of endoskeleton, we discussed the features of different cells of endoskeleton, then we discussed the structure of bone, compact bone, spongy bone, its composition, then we discussed the three different cells of bone cells, their function and their specific name, and how cartilage replaces the bone. First, stem cell, then osteoclast, osteoblast and mature cell. So this is all about endoskeleton.